Hi all. Today we are going to see how to develop a navigative web page. Means whenever if you click on this web development or web design tab, it should go to that respective page. Today we will be seeing that how to design that web page. Here you can see the simple web page. Like whenever you click on this web development, it will go on web development tab. If you click on web design, it will go on that respective page. So, agenda of today's video is designing a web page which interconnects different web pages and links different web pages like this. हम लोग इसमें एंकर टैग्स यूज करने वाले हैं टू इंटरलिंक डिफरेंट फाइल्स इंटरनली. इसका यूज बहुत सारे ब्लॉग वेबसाइट्स में भी किया जाता है. तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. एमडीएन, सब लोगों को एमडीएन पता ही होगा. Official website for HTML documentation. Like whenever you click on this references, it goes to the different page. Whenever you click on this guides, it goes to a different page. Actually, these are like buttons. Similarly, we are creating here. Whenever you click on this web development page, you should go on that web development content. Whenever you click on this web design tab, you should go on that web design content. This is the main theme of today's web development problem. Let's first create one file to write an HTML. Let's create a folder name. Let's give a name as web page navigation. Or instead of creating a folder, we can directly create a file here itself. Okay, like this. Okay, and give name is at a as a home. First, we will create a home file. I think all of you know how to write a boilerplate. Just click on the shift and exclamatory mark. Click on the enter. This is the boilerplate. Okay. Now let's give here title to this page as a home. Okay. I think all of you know that HTML boilerplate. This language means the EN means English language, and the character set is UTF-8, which allows all languages and emojis. And this is a name which we have gone to the viewport. Okay. In body tag, we are going to write our logic and the program. Like to to create this home web development and web design tabs, we need two more files like with respect for this web development and web design pages. So now first we will create those two files. Like give a name as web development web development.html, and one more as web design.html. Okay.
Now let's go to the home page. Here we have to create this home, web development and web design in a single line. Here we can use here we can't use heading because this is not a heading of that respective page. This is the navigation bar. You can consider as a navigation bar. To write all of this in a single line, we can use paragraph, right? Paragraph tag. Let me use that. Here, just by writing P, we can create a paragraph tag. In this, we can create a hyperlink using a anchor tag, and in this we can give the name of that respective web file, like this home or web design or web development, whatever we want. First, we want a home in that sequence, so we are giving home.html to link with home, right? Here you can see that output, right? In this way it is creating this, and we have to give one pipe, right, in between those words. Right, this is the pipe. Now one more anchor tag for web development. Right, and we are giving this hyperlink to web development icon. Web development icon, right? Then one more pipe. We are writing this pipe outside the anchor tag because all these are included in paragraph, and we can write anything in paragraph, right? Okay, one more anchor tag, and now connect with web design, right? And hyperlink this to the web design. Okay, let's see how is it looking. Yeah, this is what we wanted, right? Yeah, the first part is happened. Now what we want uh, the here we in next line we want home, like a heading. Okay, and even we can use heading also. In heading we can write home. Let's try that. Now we are closing that paragraph tag, and we are giving heading tag. We don't need to give any break because we are using heading tag. Okay, and here we are using h1 heading home. Okay, see, after that we can provide whatever information we want in that. Let's create one more paragraph for the information. Like you can give any random names, like owner, who is the owner of this web page, like XYZ, or you can write like which course is this,
website offering like web development, etc., etc. Here you can see that we need this owner and course on next line, because all this content is in single paragraph. Even we are writing this in VS Code as a on separate line, it will not come because the browser understands only HTML, right? So we need to give in HTML format only. To give a break, we have one BR tag. Okay, now you can see that on next line. Okay, okay. I think we're done with this home page. Now let's move towards this web development page. Okay. Now once more create a boilerplate. Shift and 1. Click enter. Boilerplate will be created. Give a title as web development. You can give like page 2, or you can give home page as page 1, then for web development page 2, whatever you want to give, you can give that. Yeah. Okay, in body, first we will create that paragraph. Then in paragraph, we will create a anchor tag to link the home page. And we will give name as home. Then we will create one pipe. Then one more anchor tag. Then web development dot html, web development. Okay, and one more pipe, and here one more anchor tag, web design. Okay, even we can copy from this home tag, but for practice purpose I have written in this way. Now let's create a heading for this web development page. You can give as a web dev, or whatever title you want to give, you can give that. This is the heading, not a title. I remember the title tag is different and heading tag is different. Now let's give some content to this page. Let's start by giving the by pressing the enter key. Here we can write any content about web development. For now I am giving lorem as 10. Okay, yeah. Does all of you know about lorem? Lorem creates a random paragraph or random content for you. If you don't have time to give a content, right? This is the random content. This is not related to web development. Don't try to relate it. Okay, just press lorem and enter. It will give you that random paragraph or random text. Okay,
Here you can see whenever you click on this home tab, it gives details of that tab. Whenever you click on web development, it gives details of that. Whenever click on, now it is not giving because we have not developed that page. Let's first develop that page, then we will talk about. Let's once more one boilerplate, write title name as web design. Okay, now you can copy this paragraph tag to here. Okay, because because the first is home, then second is web development, and third is web design. We are not going to change the sequence. Okay, now give the heading like you can give as web design, and give content to this, like create one paragraph and give a lorem star 3. Okay, uh, you can create one more paragraph and give a lorem star 2. Okay, and now you can see how is it looking. Yeah, you can see the paragraph from this line. We have created two paragraphs. Okay, whenever you click on this, it goes to the home, web development, and web design. It is working. Okay, yeah, in this way you can design a navigative web page which can navigate from one page to the another page. L- let me revise this once. ये हमारा होम टैब है, होम फाइल, जिसके अंदर हम लोगों ने बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर दिया। तो बॉयलर प्लेट के अंदर जब हम लोग ये डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते हैं तो इससे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि हम लोग कौन सा एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं। और डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब HTML5 होता है। और हम लोग HTML टैग के अंदर ये लैंग्वेज देते हैं एज ए इंग्लिश। दिस इज ओनली फॉर द ब्राउज़र, दिस इज नॉट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। तो इससे ब्राउज़र को पता चल जाता है। तो हम लोग हेड टैग में कुछ मेटा टैग्स होते हैं, हम लोग किसी जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी और फाइल को लिंक कर सकते हैं इधर। तो इस मेटा टैग में कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि UTF-8 कैरेक्टर सेट हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। और UTF-8 के अंदर सभी लैंग्वेजेस एंड इमोजीज कवर्ड होते हैं। ओके, एंड दिस कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब ये जो जितनी डिवाइस की विड्थ है उसका उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। और टाइटल इक्वल टू होम, मतलब whenever a user sees that web page, like here you are seeing home.html, web development.html, तो यूजर को वहां पे होम लिखाई दिया होगा। ओके, वहां पर होम लिख के आएगा वहां पे ब्राउजर पे। लेट मी शो। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे होम लिखा हुआ था पहले, तो यहाँ पे होम लिख के आया है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे होम लिख के आ जाता है यहाँ पे। ओके, ठीक है। हम लोग इसको एक बार लाइव सर्वर से ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, डन। Here you can see as home. Here you can see as web development, web design. Okay, it is working fine. Right, this is what we wanted to develop. यहाँ पे होम लिखा हुआ है, ये टाइटल से आ रहा है सब, ये वेब डेवलपमेंट, ये वेब डिजाइन। ओके,
नाउ लेट्स डिस्कस मोर थिंग्स। तो हम लोगों ने बॉडी में क्या लिख दिया, एक पैराग्राफ टैग बना दिया है। उस पैराग्राफ टैग के अंदर 3 एंकर टैग लगा दिए फॉर 3 टैब्स, होम टैब के लिए एक, वेब डेवलपमेंट के लिए एक, और वेब डिज़ाइन के लिए एक। एंकर टैग का यूज़ यही है कि हम लोग इसके अंदर एक हाइपर लिंक दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग किसी वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं, सो दैट हम लोग इस वर्ड को इस लिंक के साथ इंटर कनेक्ट कर सके। इसीलिए एंकर टैग का यूज़ किया जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम नहीं देना चाहते, यहाँ पे सिंपली ऐसा हैश करके लिख सकते हो, तो अपने आप एंकर टैग तो बन जाएगा, लेकिन वो किसी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा सिंपली। ओके। फिर हम लोगों ने एक हेडिंग बनाया जिसके अंदर उस पेज का नाम लिख दिया, और पैराग्राफ के अंदर उसके रिलेटेड डिटेल्स लिख दिए, और एक ब्रेक टैग भी दे दिया। ओके। तो वेब डेवलपमेंट पे भी वही सेम किया है हम लोगों ने, बस उस वेब डेवलपमेंट के पेज के हिसाब से हम लोगों ने हेडिंग और उसका पैराग्राफ चेंज किया है। और वेब डिज़ाइन में भी हम लोगों ने वही किया है, बस उसका कंटेंट चेंज किया है। ये तो एक सिंपल वेब पेज था, लेकिन आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कैसे नेविगेट करना है एक पेज से दूसरे पेज पे। यही कोर यही रहता है किसी भी बड़ी वेबसाइट का। जैसे कि आप लोगों ने अभी एमडीएन का देखा, कोर वही रहेगा, बस उसके अंदर सीएसएस और ऐड होगा, जावास्क्रिप्ट ऐड होगा, तो और अच्छा होगा, और फंक्शनैलिटी तो उसमें आ जाती है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं।